marks. अभी बताता हूँ तेरे Saira. So we were talking about the combustion and three types of combustion we already discussed: rapid combustion, spontaneous combustion, and Explosion. Explosive. explosive. And I asked you to note down the differences in between. So you noted down. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Today we'll discuss about the flame. Have you seen flame? Yes, sir. कहाँ देखी? कहाँ देखी? Candle. The candle. ये कैंडल फ्लेम है. उसका शेप कैसा होता है? You can see this is the flame. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And you see some lines. Yes, this is flame. How can we define about the flame? क्या से define कैसे? Sir, may I? Yes, Jay. So hot, glowing, ignited gas. Okay. Anybody else? Sir, visible part of the flame. Okay. बेटा प्रणव एक बात ध्यान रखना हमेशा. To define a term, don't Sorry, use sir, the मैं term. fire बोलना चाहता था. Fire. Okay. Yes. Anybody else? Sir, may I? Yes. A flame is a region where combustion of gaseous substance takes place. Yes. Combustion or burning of gaseous a reason where gaseous combustion take place. Combustion of a gaseous substance take place, that is the flame. Asha, when we compare, because both the things are available at home, the number one, candle is at home, and second, gas burner flame is available at home. Have you seen gas burner in the laboratory? Yes, sir. Yes, sir. I am talking about the gas burner. Yes, sir. That is known as Bunsen burner. Yes, sir. When suppose this is the candle flame and this is the Bunsen burner flame, both the colors are different. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Second thing, suppose this is 1 minute. Okay, so when we compare the color, अच्छा एक क्या बोलता है? ये एक केरोसिन की लैंप है और एक घी का दिया जलाया है. दोनों में क्या डिफरेंस पता चल जाता है कि विच इज घी के दिए की अलग बात होती है, उसकी स्मेल अलग होती है, केरोसिन लैंप की स्मेल अलग होती है. It is all because of burning of this reason
where burning of gaseous substance takes place. घी के दिए के सामने हम बैठते हैं, that vapor entered in our body is useful to us, but kerosene lamp, that vapor entered in our body is not useful to us, not for the eyes also. So flame is a reason where combustion of gaseous substance take place. This is the flame. All the gases which goes combustion or burn, they produce flame. But solid and liquid fuels which vaporize on heating burn with a flame. कौन कौन से सॉलिड और लिक्विड जो बर्न होते हैं, गर्म होते हैं और फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन हमने देखा है, when you burn a piece of coal, will it produce a flame? Yeah. No, sir. No, sir. It will glow. ये चमकता है. फ्लेम में और ग्लोनेस में is a difference between them. Coal does not burn by producing a flame, it just glows. चमकता है, अगर आपने कहीं देखा होगा. अब when we compare the color of the flame, already I explained you earlier. Yellow flame, what does it indicates? Yes, Niyati, yellow flame means what? Sir, sufficient amount of oxygen. Insufficient supply of oxygen. It means when the oxygen supply or air supply is insufficient, then the fuels burn incompletely, producing mainly a yellow flame. Yellow flame. And the yellow flame, it is caused by the glow of hot, unburned carbon particles due to incomplete combustion of fuel. वहां पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ज्यादा नजर आएंगे. येलो फ्लेम, अब हम ये बताओ, ये मेरे पास गैस बर्नर है और ये मेरे पास कैंडल है. घर में जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो क्या हम गैस जला के कमरे में रहते हैं या कैंडल जला के रहते हैं? Candle. मोदी जी क्यों? So, Mayor, Yes. so because the flame of candle is luminous, It is luminous because yellow light, yellow color produces light. That's why it is said to be a luminous flame or light giving flame. So that's why candle is a flame is yellow. It produces yellow flame when this wax burn. So color of the candle flame is generally yellow. Kerosene, when kerosene is burnt in a lamp, it also burns with a yellow flame. That's why जो आपने कभी देखी होगी लालटेन चिमनी जिसको कहते हैं, एक चिमनी होती है, एक लालटेन होती है, वो क्यों यूज किया जाता है केरोसिन? बिकॉज it produces light, and purpose of using candle is to get light when we are in dark. At that time we can't use LPG or PNG to get the light in the room or in the kitchen. Is it clear? Now second thing, when the oxygen supply is sufficient, proper supply of oxygen, then fuel burns completely, producing mainly a blue flame. और आप देखेंगे जहां blue flame है, it means complete combustion is taking place, and complete combustion is taking place as well as no unburned carbon particles are there or very less. And when we compare the temperature,
क्या हम टेम्परेचर ऐसे चेक करेंगे? ये कैंडल है, उसके ऊपर हाथ रख दिया, ये गैस बर्नर है, उसके ऊपर हाथ रख दिया. इज अ राइट वे टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर. क्यों भाई? मनु लोधा. Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई आती है बेटा? Yes, sir. अच्छा, क्या मुझे भी इच्छा होती है कि कभी कभी मनु की आवाज आ जाए, कभी कृतिका की. मैं नाम नोट कर रहा हूँ. जो बच्चे बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते, बताते नहीं. कृतिका, आर यू देयर? कृतिका, Yes, sir. हो बेटा जगह पे? हेलो कृतिका, Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई आती है आपको? अब नहीं आ रही आवाज. Sir, your voice is not clear. ओह माय गॉड, इतनी अच्छी आवाज है मेरी और उसको बोलती है क्लियर नहीं. आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आवाज भी अच्छी है ना? आवाज भी अच्छी है. Yes, sir. Yes, हाँ, मुझे अपनी आवाज वॉइस पे थोड़ा सा प्राउड है कि मेरी अच्छी आवाज है. गाने भी गाता हूँ मैं कई बार. ऐसा नहीं है. स्टार मेकर पे मैंने गाना 2-3 पोस्ट किए हैं, आप लोग सुन सकते हैं. Sir, आप स्टार मेकर पे हो? बस मैं यही तो जानना चाहता था कि आप में से कौन कौन है. चलिए ठीक है. सो the yellow flame and blue flame. So blue flame does not produce much light. Mainly it produces heat. It is a non-luminous flame or non-light giving flame. LPG burns with a blue flame, which is a non-luminous flame. Complete combustion takes place. तो कभी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, what are the differences in LPG gas flame and candle flame? Note down this question. Differences between blue flame and yellow flame. I am writing in chat box. If you can note down. मेरी आवाज नहीं आ रही हो, चैट बॉक्स तो दिखाई देगा सबको. Differences between yellow and blue flame. And second, why yellow flame is called luminous flame and blue is called non and why yellow flame is called luminous flame and blue is called non-luminous flame. Clear? Yes. You can write the differences in between. Hello friends, this video on combustion and flame part 1 is brought to you by SEA. We'll see about the flame. You are able to see. We already covered many topics. Concerns with Mainly, yes. All these are the flames. Matchstick, matchbox, candle, Bunsen burner, wood flame, coal flame, and this gas flame. when you try to burn a lot of wood or charcoal or coal. So what happens when you burn these substances? What do you see? When a candle is burning, what do you see?
we see the fire, that it is visible. Similarly, when the Bunsen burner is on, we can see the flame again. You can see better some zones in the flame. This is candle flame which is yellow, but something is in between. Just see in the Bunsen burner, the outer part is yellow, outer part is blue. When you burn wood, you can actually see the fire which is being produced. The gas burner, when switched on, again, what do you see? You see flames. Now, if you look at all of these flames and fires, they all look very different from each other. Do you think the flame of the candle and the flame out of the gas burner, both of them look similar? No. Even their color is different, their appearance is different. So now in this lesson, we are going to discuss all about burning, how this phenomenon produces fire. Is it that all substances can give rise to fires and flames? So we have a process in which a substance... We already discussed this process in which a substance reacts with oxygen to release heat and light. Our main purpose is to learn about the flame. Process that is taking place is combustion, because as soon as I burn it, the substance, that is the coal or the wax of the candle, it is reacting with a lot of used coal, where it is not combustion. Now, let us look at some examples of combustible substances. Now, what are combustible substances? Those substances heat. So, Which burn easily to release heat and light. All these are the combustible substances. Example of magnesium or aluminum powder. Now, most of the metals as such, like if you take example of iron or any metal as such, they are non-combustible. They do Most of the metals are non-combustible. not undergo burn. They do not burn to release heat. But some metals in their powder form, for example, aluminum powder or magnesium powder. So all these powdered form of metals, they are combustible. That is, they get burned. This is important point. Ki most of the metals are non-combustible, but in their powder form they are combustible. Different ways. Some of them will produce huge fire, some of them will produce flames, low combustion, because nothing happens to the nail. The nail doesn't get burned, so it doesn't burn easily. So that is why it is non-combustible. So the many we take examples of glass. Glasses also do not burn. Take example. What I wanted to show is not in here. You can see if you have your textbook. You have your textbook with you, Karuna? Karuna? Karuna Singh Tumar. Anmol? ये ऋषिका कहाँ चले गए सारे के सारे? Yes, sir. Yes, sir. अपनी जगह पे हो या कहीं चले गए? सर यहीं तो बैठा हूँ। Hello. सर यहीं बैठा हूँ। Yes, sir. ये आवाज कुछ आई। अब मैं आपको फ्लेम के बारे में दिखा रहा हूँ, जो मेरे का मेन पर्पस था दिखाने का। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये फ्लेम के बारे में दिया हुआ, यू कैन सी। So here we are going to talk about flames and how are flames different for different
combustible substances. So what exactly is a flame? So it is a hot, glowing, ignited gas during combustion. Now, whenever the process of combustion happens, that is, the combustible substance reacts with oxygen, releasing a lot of heat and light. So, how is this heat and light released? It is released in the form of. You can note down hot, glowing, ignited gas during combustion. That is flame. Now, this flame again differs from one object to another. So, if you look at a candle, so the first thing that comes to your mind by looking at the flame is that of the flame of a candle. So, if you look at the flame, how does it look? It looks somewhat yellowish to orange in color. That's how it normally looks when you see it from far. What is flame? Visible gaseous part of fire. So this is the visible gaseous part. It is actually gas. So do you think that flame is a solid or a liquid? No, it is not gas. So it is the ignited gas which becomes visible during combustion. So that is called flame. Now, if you look at the flames from different objects, that is the candle flame or the LPG flame or even the Bunsen burner flame. So all of them, they look quite different from each other. So if you look at the Bunsen burner flame, it is more bluish in color. If you look at the candle flame, it is more yellowish or orangish in color. If you look at the LPG flame again, there also so the type or the structure of the flame, the color of the flame, it varies from one object to another. But the question is, do all substances produce flames during burning? What is your answer? Do all substances produce flame during burning? No, sir. Again? No, sir. No, sir. No, sir. Now we know that combustion doesn't happen for all substances. Necessary that all combustible substances will produce flame when they undergo. The first example is that of a candle. So when you bring a match during combustion. Now let us take another example of, say, charcoal. So what is charcoal? Charcoal is the object which is obtained by heating wood in absence of oxygen. So if you heat wood, what you get is nothing but charcoal. Charcoal also acts as a fuel. So when you burn charcoal, what happens? Do you see flames? Now in the picture you see, it clearly shows that there is no flame as such. All you can see is a reddish glow. There is no flame as such. So that means not all combustible substances produce flames, but in this case, heat is produced, right? So heat is being produced, but there are no flames. So that means not all substances produce flames during heat. Substances which vaporize. Yeah, this is the point. Substances which vaporize during burning produce flames. You can note down. Vaporize during burning produce flames. Now, what do we mean by vaporize? That means those substances which get converted into their vapors during burning, only they produce flames. Now, again, let's go back to the example of the candle. So, in candle, what do you think is getting vaporized when it is being burned? It is the wax. So, the candle. Have you ever watched So it vaporizes. It vaporizes and it produces flame. burning? The wax is actually being melting. So that means the wax is actually getting, those wax melts are actually getting converted into vapors, and due to the formation of those vapors, we are able to see the flame, because flame is nothing but the ignited vapors. Vapors are only being visible. No vaporization is happening. Nothing is. Here is no vapor in the charcoal. So not only candle, let us take other examples also. So if you take the example of the gas burners, so there also what is it that is getting converted into vapors? It is nothing but the LPG. The LPG gas which is stored inside the cylinders. So LPG is stored in cylinders with most of it being in liquid form and an upper layer being gaseous. So what takes heat from the surrounding environment and naturally reverts to a gaseous state. So in order to vaporize, what we need to do is just take a matchstick or a gas lighter in front of it. And that's it. Gets vaporized, and due to the process, you would have observed that if your gas burner, this area, if it is wet,
So if it is wet, in that case, even if you bring the matchstick near it and switch it on, but it doesn't catch fire easily. Why? Because of the presence of water. So water will lower its ignition temperature, and therefore it will not getting vaporized. Even if you talk about the Bunsen burner, This is final example. Bunsen burner. in the Bunsen, please have a look at it. You will see that there is this gas pipe to where So it was all about the gases, flames, and which vaporize on heating, they produce this flame. And as you know that in your textbook there is a picture of flame. You got that picture of flame? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am showing you this picture. And in the flame, candle flame, yes, it is here. So you can see which is the hottest part of the candle flame. Outermost. Outermost part. Outermost. And what is Outermost. the color? What is the color of that flame? Blue. 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 And middle zone, middle zone, Luminous zone. Yellow. 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 It is partial compression. And you can see beta innermost zone of unburnt wax vapor, that is least Black. hot or black. It means there are three zones of flame. Innermost zone of a flame, that is dark or black. Middle. Middle zone of a flame, that is yellow. And outer zone of a flame, that is blue. Which zone of the flame has highest temperature, blue, yellow or black? Blue. 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 Because complete combustion is taking place here. So you have to draw this picture. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिख रही है, एक्टिविटी 6.5. Got it? Yes, sir. Yes, sir. I have to share the screen. Yes, sir. Okay, I am sharing it. It's taking time. Now got the full size of the book, your page? Yes. This is given here. This is activity 6.5. Light a candle, hold a 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in dark zone of the non-flickering flame, black flame. Bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. Do you see a flame pot at this end of the tube? What is that produces a flame? क्या बता सकते हैं आप? आपको मैं समझा दे रहा हूं ये पर। यहाँ पर देखना है इस एक्टिविटी में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं. This activity is to show the innermost zone of a candle flame contains unburnt particles. एक ये होगा और एक हमारा बताना होगा. तो इसमें हम कहां पर ला रहे हैं? इन द डार्क जोन. ये डार्क जोन कहां पर है? इनर मोस्ट. ये एक ग्लास ट्यूब है, दैट इज होलो ट्यूब. वन एंड ऑफ दिस ग्लास ट्यूब इन द middle part of the flame, this is another, and when we bring a burning matchstick to the second end of the tube, so what happens? Will it catch a fire or start burning with a flame here in the second end? Yes.
when we bring a lighted matchstick near this end of glass tube, the Yes, wax, yes, you are right, wax vapor coming out of it starts burning and producing a flame. So this shows that the innermost zone of the flame that also consists unburnt wax vapors. ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरी चीज आप देखेंगे, यहां पर देखते हैं आप, यहां पर हमने दो ग्लास स्लाइड्स हैं, यस, ग्लास स्लाइड्स आर देयर. हमको इससे ये बता सकते हैं, दिस इज द एक्टिविटी दैट शोज दैट मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. तो यहाँ पर जब भी हम कैंडल के ऊपर कुछ भी रखते हैं तो ऐसा ब्लैक स्पॉट हो जाता है. दिस ब्लैकिश रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम. So this black spot formed on the slide, it shows that partial combustion of wax vapor in the middle zone produces unburned carbon particles. इसी के कारण ये ब्लैक हो गया है. एक चीज आपने और देखी होगी, आपने ये कहीं देखा है गोल्ड स्मिथ, किसी की सोने चांदी की दुकान पे आपने देखा ये काम होते हुए? Yes, sir. फिगर 6 किसने देखा है? देखा है ना बेटा? तो आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक लंबी सी उनके पास ट्यूब रहती है, वो ट्यूब का एक हिस्सा अपने मुंह में रखते हैं और दूसरा हिस्सा उसको बिल्कुल फ्लेम में रखते हैं, और जो आयरन, जो गोल्ड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वहां पर उसकी वेपर निकलती है, उसको भी वो मेल्ट कर देते हैं. इसके पीछे क्या रीजन है? गोल्ड स्मिथ सुनार blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? Can anybody give me answer? Yes. Sir, because outermost Sir, because it is part of the flame hottest part of is the hot, flame. Yes, is hottest you are part right. of flame. Yes, it is the hottest part of the flame, and that's why when they keep it on the flame, so the silver and gold they start melting. तो आप देखिए बेटा कि जरा सी कैंडल से वो गोल्ड को मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो उस जगह से फ्लेम को फूंक मार के वहां तक पहुंचा रहे हैं जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जिस एरिया का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वहां ये इसको करते हैं. तो कुछ एक्टिविटीज हैं जो अभी आपको घर पे नहीं करना है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है. आप देख भी सकते हैं इसको, आप YouTube पर या किसी भी वीडियो में इस चीज को देख सकते हैं. बेटा मार्क्स के बारे में ऐसा है, अखिल के बाद आप बोल रहे हो, मार्क्स मैंने एग्जाम सेल में दे दिए हैं, और यू कैन ओपन द कैमरा, और कुछ ही दिनों में आपके पास आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा. अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, हम लोग जिस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, आप लोग भी और स्कूल भी जो अपना मैक्सिमम पॉसिबल जो चीजें वो आपको प्रोवाइड करा रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है या मार्क्स इंपॉर्टेंट है? लर्निंग. ये आपको भी मालूम है कि जो एग्जाम आपने दिया है, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि उसने गूगल में जो दिख रहा था वो का वही नोट कर दिया, वहां भी दिमाग का यूज नहीं किया. एक क्लास में दो ब्रदर एंड सिस्टर्स एक साथ ही पेपर दे रहे थे और दोनों ने एक जैसा पूरा पेपर लिखा, बिल्कुल मिलजुल के पेपर लिखा, एक ही क्लास में थे. हम कितनी भी बात कर लें लेकिन थोड़ी बहुत तो गड़बड़ करने का मन हो ही गया होगा ना किसी का. हुआ था कि नहीं हुआ था? जब आप पेपर लिख रहे थे तो कहीं देखने की इच्छा हुई थी?
यस सर, हुई तो थी पर कॉपी मम्मी के पास थी। मोबाइल तो अपने पास था। सर साइड में मम्मी बैठी थी। सर वो उस टाइम भूल ही गया था। गुड। तो आप एक चीज ध्यान रखना, मार्क्स आपके कम है या मार्क्स आपके ज्यादा है। हमारा लास्ट ईयर और अभी से ये टॉप फ्लोर तेज चलना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। हम सोच के आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, ये भी होगा कि जब हम सोचेंगे तो कभी कभी हमारी सोच का लिखा हुआ आंसर गलत भी हो सकता है, चांसेस आर देयर। लेकिन ये डेवलपमेंट करना कि हाँ वी आर नाउ रेडी टू स्टार्ट थिंकिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो कुछ दिन में ही आपका डिजिटल रिपोर्ट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा अखिल, इतना परेशान मत हो ना। रात गई बात गई, चला गया पेपर तो कहाँ का कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके बता रहा हूँ। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर का टेस्ट होगा, कब होगा? ट्यूसडे। आर यू रेडी फॉर ट्यूसडे और सैटरडे? सर ट्यूसडे। Tuesday. Tuesday, okay, I am ready. I will make 10 or 15 MCQ questions to check your performance, your learning. Okay बेटा, now few question answers. कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग अपना टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के वो तो करेंगे ही। इसके अलावा आपको यस ट्यूसडे फाइनल विल कंडक्ट टेस्ट ऑन ट्यूसडे। आई एम शोइंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द दीक्षा स्टडी प्लेटफॉर्म। यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन। सर मुझे एक डाउट है बुक में। हाँ यस बेटा पूछो। सर बुक में एक जगह लिखा हुआ है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सर इसका Yes. मतलब समझ में नहीं आया। बेटा इसका ये मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास माचिस है, दिख रही है ना आपको? देखिए, और मेरे पास है पेपर। मैंने मैच स्टिक जलाई और इस पेपर के पास लाके हटा दी। ये जल जाएगा हर बार? नहीं जलेगा। लेकिन मैं इसको 2 सेकेंड्स के लिए भी यहां रखा, इट विल कैच फायर। चलो, मैच स्टिक की जगह पेपर की जगह अब मैंने वुडन स्टिक ले ली और वुडन स्टिक को मैंने यहां रखा, मैच स्टिक से उसको जलाने की कोशिश की। क्या एक मैच स्टिक से लकड़ी जल जाएगी? ये तब तक नहीं जलेगी। कोई बता सकता है इसका आंसर? अग्रवाल जी, अखिल अग्रवाल। Yes, sir. May I? 1 मिनट अखिल। Yes, sir. हाँ, why this wooden stick? Wood is a combustible substance, but it could not catch fire when I bring a burning matchstick close to it. Sir, क्योंकि sir wood, sir actually sir wood is hard, sir. Sir wood is hard and sir it is insulator. क्या बोल? Insulator. It is insulator of sir bad conductor of fire and electricity, heat and electricity. तुम्हारे कान बताओ बेटा कहाँ है? अपना राइट हैंड उठाओ, थोड़ा सा इसको करो ऐसे झटका दो। गुड। हाँ, नाउ प्रखर, योर टर्न। Yes, sir. Sir, its ignition temperature is high, means sir it need more heat to burn. That's why. यस बेटा, वेरी गुड। बेटा जब मैंने इसको मैच स्टिक से जलाया तो सपोज हम मान ले रहे हैं कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच इट कैचेस फायर इज 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 40 डिग्री सेल्सियस लाने तक हमको ये हीट यहाँ सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो 40 से नीचे है टेम्परेचर, इट विल नॉट कैच फायर। आगे बेटा समझ में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। सो नाउ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर भी देख सकते हैं।
we need to take special care in storing kerosene oil. Why? Because kerosene oil does not catch fire on its own at room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catches fire. So हमको संभाल के रखना चाहिए kerosene और petrol को. Yes, sir. Next. Yes, sir. Yes, food is a fuel for our body. Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. Why, beta? Yes, sir. Why? सर जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो फूड ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी वाटर ऑक्सीजन सर Yes, in our body it is broken down due to oxygen and heat produced. Two characteristics of ideal fuel. Already we discussed many times. Two combustible substance, ignition temperature. The lowest temperature at which a combustible substance when heated catches fire is known as ignition temperature. You can note down the definition of ignition temperature. Define ignition temperature. If you haven't, the lowest temperature at which a combustible substance when heated catches fire is known as ignition temperature. Inflammable substance. Substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. I will discuss so many things in last one more period. I may conduct test on Tuesday or on Saturday. Okay? So, ready for Shanti Path? Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Sai Ram. Thank you, sir. Sairam, sir. Thank you, sir.